इस आरसी में हमें एक्चुअली जब भी हम कोई आरसी पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले देखना क्या होता है कि ठीक है, उस आरसी का कंटेंट क्या है, ऑथर की टोन क्या जा रही है, ऑथर का पर्पस क्या होगा इस आरसी को लिखने का, या फिर इस क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल से या कहीं से किसी सोर्स से तो उठाया ही होगा आरसी। तो ऑथर का पर्पस क्या रहा होगा एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को लिखने का, एंड देन फिर पूरे पैसेज को लिखने का, राइट। डू स्पोर्ट्स मेगा इवेंट्स लाइक द समर ओलंपिक गेम्स benefit the host city economically? Okay, it depends, but the prospects are less than rosy. ये इतनी सिर्फ इतना पढ़ के मुझे इतना समझ आ गया कि पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर कि भाई ठीक है, क्या ये समर ओलंपिक गेम्स एक्चुअली में किसी भी होस्ट सिटी को इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं? बट फिर ऑथर अपना आंसर देता है, इट डिपेंड्स बट द प्रोस्पेक्ट्स आर लेस देन रोजी, विच मीन्स कि ऑथर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इसके फेवर में तो नहीं है, वो इसको नेगेटिव देखता है कि नहीं शायद। बट ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। द ट्रिक इज कन्वर्टिंग सेवरल बिलियन डॉलर्स in operating cost during the 70-day feast of the games into the basis for long economic returns. These days, the Summer Olympic Games themselves generate total revenue of 4 billion to 8 billion. But the lion's share of this goes to the International Olympic Committee, the National Olympic Committee, and the International Sports Federation. Okay. Any economic benefit would have to flow from the value of games as an advertisement for the city. The new transportation and communication infrastructure was created for the games or the ongoing use of the new facilities. All right. तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि भाई समर ओलंपिक्स में जो है आजकल इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, विच इज क्लोज टू 4 बिलियन टू 8 बिलियन, बट इसका लायन शेयर जो है वो इन तीनों में चला जाता है। ठीक है, अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होता भी है गेम्स में तो वो एडवर्टीजमेंट से होता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से गेम्स के थ्रू होता है, या फिर ऑनगोइंग यूज ऑफ द न्यू फैसिलिटीज। ऑनगोइंग यूज किस सेंस में? ऑनगोइंग यूज इस सेंस में कि चलो अगर होस्ट सिटी ने कुछ भी बना दिया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो शायद लेट्स से कोई स्टेडियम ही बना दिया, तो शायद आफ्टर तुम्हारे गेम्स खत्म हो जाएंगे, शायद वो स्टेडियम कॉन्टिन्यूसली यूज होता जाएगा, तो जो उन्होंने रेवेन्यू खर्च करा है शुरू में वो बेसिकली उन्हें वापस मिल जाएगा। ओके, एविडेंस सजेस्ट दैट एडवर्टाइजिंग इफेक्ट इज फार फ्रॉम सर्टन। वो यहाँ पर एविडेंस की बात कर रहे हैं कि यार जो एडवर्टाइजिंग इफेक्ट है वो सर्टन नहीं है, इट्स फार फ्रॉम सर्टन। ऑलराइट, मतलब फिक्स नहीं है। The infrastructure benefit depends on its initial core condition of the city and the effectiveness of the planning. अब infrastructure का जो benefit है वो depend करता है initial condition क्या है city की और कैसे effectiveness क्या है planning की। The facilities benefit it's dubious at best for buildings such as velodromes or natatoriums, and the problematic for 100,000 seat Olympic stadiums. All right. The latter require a conversion plan for future use. The former are usually doomed to near vacancy. Hosting the summer games generally require 30 plus sports venues and dozens of training centers. Today, the bird's nest in Beijing sits virtually empty, while the Olympic stadiums in Sydney cost nearly some 30 US dollar million a year to operate. All right. If you read this sentence, which says the facilities benefit is dubious at best for building such as velodromes or natatoriums and problematic for 100,000 seats Olympic stadium, कि मतलब ठीक है तुमने इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बना दिए, ये बना दिए, बट जो बेनिफिट है उसका वो एक्चुअली डूबियस है कि क्या एक्चुअली उससे लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता एक्चुअली। अगर तो क्योंकि अगर तुम ये वाला सेंटेंस पढ़ोगे द लेटर रिक्वायर अ कन्वर्शन प्लान फॉर फ्यूचर यूज, विच मीन्स कि भाई ठीक है, अगर तो तुम उसको किसी भी तरीके से फ्यूचर यूज में ला सकते हो, अगर तुम इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बना रहे हो तो शायद उसका कोई बेनिफिट भी हो। बट देन द सेकेंड एग्जाम्पल द ऑथर इज टेकिंग ऑफ दिस बर्ड्स नेस्ट इन बीजिंग, कि भाई वो तो वर्चुअली एम्प्टी है, while the Olympic Stadium in Sydney cost US $30 million a year to operate. Right? Let me move ahead. All right. Part of problem is that Olympic planning takes place in a frenzied and time pressure atmosphere of intense competition with other prospectors host cities. Not optimal condition for contemplating the future shape of an urban landscape. All right. Another part of the problem is that urban land
is generally scarce and is growing scarer, the new facilities often stand for decades or longer. Even if they have future use, they are the best use, if they are they the best use of precious urban real estate? So ऑथर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम की बात करें कि प्रॉब्लम ये है कि ओलंपिक प्लानिट में यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर लगता है, बिकॉज आप भी सोच रहे हो तो लेट्स से कि यूजुअली वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि किसने अच्छा गेम ऑर्गेनाइज किया है। सो इंटेंस कंपटीशन होता है होस्ट सिटीज के बीच में, ठीक है, और अदर प्रोस्पेक्टर्स क्या क्या वो अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इससे पहले कहाँ अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था एंड स्टफ लाइक दैट। और उसकी वजह से द क्वेश्चन एट लास्ट ऑथर आस्क द क्वेश्चन कि भाई क्या ये जो हम इतना प्रेशियस हमारा अर्बन रियल एस्टेट है, वहां पर हम इतनी सारी फैसिलिटीज डेवलप करके क्या उसका हम बेस्ट प्रेशियस यूज कर पा रहे हैं? और हमें ये भी बोला हुआ ऑथर ने कि देखो अनदर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम की बात हो रही है कि अर्बन लैंड जो है वो जनरली वैसे ही इतना कम है और वो हर दिन पर दिन वो और कम होता जा रहा है। तो ठीक है, सो क्या ये एक्चुअली बेस्ट यूज है रियल स्टेट का, अर्बन रियल स्टेट का, कि वहां पर तुम किसी भी अर्बन सिटी में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करो ओलंपिक जैसा गेम जहां पर तुम्हें 30+ वेन्यूज चाहिए, इतने बड़े बड़े स्टेडियम चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट? Further, cities must consider the human cost. All right. Residential areas are raised and citizens relocated without adequate preparation or compensation. Life is made more hectic and congested. There are, after all, other productive uses that can be made of vanishing fossil resources. तो वही बात हो रही है जब लास्ट में ऑथर ने ये बोला ना, देयर आर आफ्टर ऑल other productive uses that can be made of vanishing facial resources. I get to know कि यार मेरे ऑथर का व्यू पॉइंट ना किसी भी सिटी में और ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत नेगेटिव है, क्योंकि वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये बेस्ट यूज है, फिर वहां पर ये बोलता है कि और प्रोडक्टिव यूज हो सकता है इस लैंड का, ठीक है, फिर ह्यूमन की कॉस्ट समझो, क्योंकि आपको अगर ये बनाना है तो आपको रेजिडेंशियल एरिया में से लोगों को हटाना पड़ेगा, सिटीजन्स को रिलोकेट करना पड़ेगा। इवन इफ वी हैव read in the first para only the prospectors are less than rosy. So I get to know कि author इस चीज के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है, he is having a negative attitude towards organizing the Olympic Games, all right, in a kind of host city. Right, let's move ahead with the question, and then if we feel like we need a thorough discussion about a particular stuff in this particular passage, we can have that kind of discussion, right? So question number one. All right, so our question number one देखें, which says the central point in the first paragraph is that economic benefits of the Olympic Games. All right, so मुझे आंसर करना है इस क्वेश्चन में सेंट्रल पॉइंट फर्स्ट पैरा का, और इकोनॉमिक बेनिफिट वाला पॉइंट भी कवर होना चाहिए ऑफ द ओलंपिक गेम्स is shared equally among the three organizing committees. So this is wrong because I don't know कि वो equally shared हो रही है उन तीन organizing committee में या नहीं। मुझे इतना पता है कि हाँ लायन शेयर तो जा रहा है उन तीन कमिटी में, बट क्या वो इक्वली शेयर हो रही है नहीं, आई डोंट नो। accrue mostly through revenue from advertisements and ticket sales, but again वहां पर तो साफ साफ बोला हुआ था ना कि देखो अगर है भी तो वो far from certain है, राइट? और ठीक है, लेट मी मूव विद ऑप्शन नंबर थ्री, एक्यूट टू होस्ट सिटीज इफ एट ऑल ओनली इन लॉन्ग लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, ये तो बात प्रिसाइसली बात हुई थी, ठीक है, आर यूजुअली इरोडेड बाय एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द होस्ट सिटी। द पॉइंट इज की ये बात सही तो है, बट मेरे को आंसर किस फॉर्म में करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ तो मैं उल्टी बात कर रही हूँ कि देखो जितना होता भी है वो भी होस्ट सिटी और कर्जे में डूब जाती है, खर्च हो जाता है स्टफ लाइक दैट, तो मेरे को तो बेनिफिट की बात करनी है ना, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये फर्स्ट और फोर्थ तो मैंने बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिया। सेकंड एंड थर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स एंड टिकट सेल्स, बट यहाँ पर बात ना ये हुई थी कि फार फ्रॉम सर्टन, सो आई कैन नॉट बी दैट मच ऑफ श्योर कि मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ही होगा, बट यहाँ पर मैं श्योर हूँ क्योंकि एक्यूट हो सिटीज इफ एट ऑल अगर होगा तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में होगा। प्रिसाइसली दिस वाज द central idea and central point of your first paragraph, and also in accordance with the economic benefits, right? So the point is this is a side trap, which means this is correct but not the correct answer of this question, so you will eliminate this option. All right, let's move to question number two. All right, question number two says
Sports facility built for Olympics are not fully utilized after the games are over because alright कि भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है जो बनती है ओलंपिक्स के लिए वो फुल्ली यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाती आफ्टर द गेम्स आर ओवर। अगर तुम उस सेकंड पैरा पे जाओ, वेट लेट मी जस्ट चेक। ऑलराइट सो अगर हम ये वाला पैरा देखें, सेकंड पैरा विच सेज okay, the infrastructure benefit depends on the initial condition of the host city and the effectiveness of the planning. The facilities benefit is dubious at best for buildings such as velodromes and auditoriums, and problems for 100,000 seats Olympic stadiums. The latter require this. Hosting the Summer Olympics generally require 30 plus this. Today's the bird's nest in Beijing is sit virtually empty, while the Olympic Stadium in Sydney cost to some 30 US million dollar a year to operate, which means even though यहाँ पर ये vacant है बीजिंग वाला, एंड देन योर सिडनी ओलंपिक स्टेडियम है जहाँ पर ऑपरेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऑलराइट, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। हाँ, कि भाई ओलंपिक के लिए जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनी होती है वो फुल्ली यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाती आफ्टर गेम्स आर ओवर बिकॉज their scale and cost of operating them are large. Yes, but let me move with other options also. Their locations away from the city usually limit the access, easy access, but the point is कि नहीं वो तो usually तुम्हारी वो city में होती, but again I cannot say this as much as clearly as I can say with option number 1 because for this option I have 100% evidence that is present in my passage. The authorities do not adapt them to the local condition. Again, I don't know, they become outdated having been built with little planning and the um, time pressure. But the point is कि I know कि this thing is clear, this thing is absolutely correct, but here I have a rotten word which is outdated. I don't know whether it is outdated or not, so I cannot say this. This option number 1 for sure I can say because for scale I have example of Beijing in my passage, and for cost of operation I had the example of Sydney in my passage. Right, so this option number 1 is correct. Now let's discuss the question number 3. So question number 3 says the author feels that the games place a burden on the host city for all of the following reason except that, which means I need to look for that reason जिसकी वजह से author नहीं feel कर रहा कि वो host city पे burden place कर रहा है, right? They divert scarce urban land from more productive uses precisely. तो author बोल रहा है कि यार इसकी वजह से अर्बन सिटीज में तो होगा ही होगा बर्डन, राइट? तो ये तो नहीं हो सकता मेरा आंसर। दे इन्वॉल्व द डिमोलिशन ऑफ रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स टू अकोमोडेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये भी है, इसकी वजह से भी बर्डन होता है। तो साफ साफ बोला हुआ है पैसेज में, प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन वी नीड टू रिलोकेट द रेजिडेंट्स। ऑलराइट, तो ये नहीं होगा। द फाइनेंसेस यूज्ड टू फंड द गेम्स कुड बी बेटर यूज, ये तो प्रिसाइजली ऑथर ने बोला हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, विच मीन्स ये होगा। द इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग द गेम्स places a huge strain on the urban infrastructure. Yes, this is the correct answer. ये साफ साफ very clearly in your passage the author has mentioned these reasons to state that these reasons play a burden to the host city. So if this is the best use of the urban land to like host a game like this and stuff. All right, let's move to question number 4.